Hello students, welcome to Charu's classes. Today we are starting with exercise 1.2 Rational Numbers Class 8. First question, represent these numbers on the number line. First, 7 by 4. So सबसे पहले let's analyze the number 7 by 4. First thing, it's a positive number, तो ये 0 से right hand side पे आएगा. तो जब हमें एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो ले लेंगे सो दैट वी हैव द राइट साइड ऑन द नंबर लाइन फ्री जिसमें हम प्लॉट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग दैट वी शुड सी इज़ कि नंबर जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच में आ रहा है या उससे बड़ा है. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है लाइक इन दिस केस 7 by 4, न्यूमरेटर इज़ बिगर देन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ ये नंबर 1 से ज़्यादा होगा. तो हमने सेकेंड चीज़ ये देख ली कि ये नंबर 1 से बड़ा है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ वी प्लॉटेड. सो वी हैव टू लुक एट द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर यहाँ 4 है, विच मीन्स ईच नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. तो अगर हम यहाँ पे ये नंबर 1 लेते हैं तो 0 and 1 इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए लेट्स पॉइंट. सो 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 and the number 1 is 4 by 4. इसके आगे यहाँ पे जब 2 आएगा, again between 1 and 2 we have to divide it into 4 parts. So dividing it into 4 parts means बीच में 3 नंबर आएंगे. तो 1 क्या है, that is 4 by 4. यहाँ आएगा 5 by 4, 6 by 4 and this number is 7 by 4. Let's see the next question. Minus 5 by 6. So first thing, it's a negative number. That means 0 से left hand side पे we have to plot it. तो इस केस में हम 0 को right hand side पे ले लेते हैं. Next we have to check whether the number comes between 0 and 1 या उससे ज़्यादा है. तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, that is the number is going to be between 0 and 1, and since it is negative therefore it is going to be between 0 and minus 1. अब डिनोमिनेटर चेक करते हैं, that is 6. that means 0 and minus 1 को हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, where minus 1 will be your 6th part, that is minus 6 by 6. जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो यूज़ अ स्केल एंड मेक दीज पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. जो भी नंबर्स आप प्लॉट करते हैं, जो डॉट्स आप बनाते हैं, दे शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर. सो लेट्स बिगिन. सो बिटवीन 0 and minus 1 वी हैव टू मेक डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, विच मीन्स इसके बीच में 5 नंबर्स आएंगे. सो देयर विल बी minus 1 by 6, minus 2 by 6, minus 3 by 6, minus 4 by 6 and minus 5 by 6. And minus 1 will be minus 6 by 6. So this is your number minus 5 by 6. Second question, represent minus 2 by 11, minus 5 by 11, minus 9 by 11 on a number line. These are all negative numbers. So यहाँ पे हम 0 को right hand side ले लेते हैं and we keep the left hand side open for us to plot the numbers. Now we have to check the denominator. सबसे पहले तो सब numbers को check करते हैं कि whether they will be between 0 and 1 or they will be crossing that. So whether it's 2 by 11, 5 by 11, 9 by 11, सब में numerator is smaller than the denominator, which means ये numbers 0 and minus 1 के बीच में आएंगे. Now we check the denominator which is 11. तो 0 and minus 1 के बीच में basically minus 1 should be the 11th part. तो इसके बीच में हमें 10 parts बनाने हैं so that minus 1 becomes the 11th part. So there is minus 1 by 11, minus 2 by 11, minus 3 by 11, minus 4 by 11, minus 5 by 11, minus 6 by 11, minus 7 by 11, minus 8 by 11, minus 9 by 11, minus 10 by 11 and minus 1 is my minus 11 by 11. Now let's plot it. So 0 से left side जाते हुए this is minus 1 by 11, this number is minus 2 by 11.
then minus 3, minus 4. This number is minus 5 by 11. Minus 6, minus 7, minus 8, minus 9. This number is minus 9 by 11. So here we have plotted the numbers on the number line. Question number 3. Write 5 rational numbers which are smaller than 2. हमें rational numbers लिखने हैं which are smaller than 2. So अगर हम whole numbers, natural numbers, integers जो भी smaller than 2 है वो भी लिखते हैं तो वो भी rational numbers ही हैं. So just let's write the numbers which are smaller than 2. So 2 से छोटा we have 1, we have 0, we have minus 1, minus 2, minus 3. This I have written 5 numbers. You can choose any numbers. You can also take numbers like 1 by 10, 0 by 10, minus 1 by 10. So any number which is smaller than 2 can be written here. These are the 5 rational numbers smaller than 2. Question number 4. Find the rational numbers between minus 2 by 5 and half. यहाँ पे 2 rational numbers given है, minus 2 by 5 and half, and we have to find rational numbers between them. So in this actually, this question is you have to find 10 rational numbers between them. तो हम इनको rational numbers इनके बीच में find out करने से पहले we make their denominators equal. तो जैसे हम fractions में करते थे, हम denominators का LCM लेते थे, same हमें rational numbers में भी same करना है. Let's take LCM of 5 and 2. So this is coming as 2 into 5, 10. Now let's make both the denominators into 10. So minus 2 by 5 को अगर मुझे denominator 10 में convert करना है, means 5 is to be multiplied with 2 and 2 को भी 2 से multiply करेंगे. So this number is minus 4 by 10. And the other number half, अगर उसे मुझे denominator 10 में convert करना है तो 2 को 5 से multiply करना होगा. So same 1 को भी मैं 5 से multiply करूँगी. This gives me the number 5 by 10. Now denominator 10 is same. Let's just quickly check कि minus 4 and 5 के बीच में do we get 10 rational numbers. So minus 4 और 5 के बीच में means we cannot count minus 4 and 5. We have to look for the numbers between, which are minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 and 4. So these numbers, they are coming 8 and we need 10 numbers between them. तो हम क्या करेंगे? Keeping the denominators same, we are going to increase the 2 rational numbers. उससे हमें कोई भी 10 rational numbers between मिल जाएंगे. So how can we do it? So there are plenty of ways. या तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बेसिकली हमें इसमें या तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से कर देना है या 10 से कर देना है. ऑल द पॉसिबिलिटीज़ आर ओपन. कभी कभी आपका आंसर अगर बुक से मैच नहीं हो रहा है या फिर आपके फ्रेंड से मैच नहीं हो रहा, दैट डजंट मीन दैट योर आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज 10 rational numbers between the two numbers, there are plenty of rational numbers between any 2 rational numbers. तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So I'll multiply numerator and denominator both with 2. This gives me minus 8 by 10 and here it is giving me, minus 8 by 20 and 10 by 20. Now I have plenty of numbers between minus 8 by 20 and 10 by 20. I can take any. Minus 7 by 10, minus 6 by 10, minus 5 by 10, minus 4 by 10, minus 3 by 10. I can even take 0 by 10 भी आप इसे लिख सकते हो. I can take some of the positive numbers also, like 1 by 10, 2 by 10, 3 by 10. I can take 5 by 10. So I think I have written 10 numbers. So any 10 numbers between the two can be written. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.